Hello students, we are going to learn about now 8th standard second lesson health and diseases. In earlier video we have discussed till typhoid, that is chart which is given on page number 7. Now we will start with observe and discuss. Now let us see photo or picture which is 2.4 in the textbook, and then we will discuss. Now you can see in this figure 2.4, that is dirtiness in the surrounding. You can see over here it is a puddle where water logging is here, and in this water logging mosquitoes breed. Their larvae grow on this water, and like butterflies it also has life cycle as egg, larva, pupa, adult. So larvae grow in these puddles in this water. Then this is a container which is not having proper lid. So if a lid is slightly also open, then the mosquitoes will breed inside this. Now here is a tire where inside of the tire water logging is there. Here inside the tire the larvae mosquito larvae will be there, and then there will be breeding of mosquitoes. Here also the container is open, vessel is open, so mosquitoes will breed over here. And here are the crevices in the bricks. Here also there will be water logging, and then there will be mosquito breeding. Here flower vase is there in our house. We don't change the water in every day. If we do this, stagnant water remains in the flower vase, and then mosquito breeding takes place over there. Okay, so what care should be taken around is you have to close the lids. You don't allow the water logging to be over here. Don't allow the puddles to form, so that there will be water logging. Now where do we see the waterlogged material shown in the picture? Where do you see the waterlogged material shown in the picture? Which hazards do you anticipate with the help of picture? Where do you see the waterlogged materials shown in the picture? I have already discussed with you. Which hazards do you anticipate? मतलब आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? एंटिसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करना कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इससे, वाटर लॉगिंग से मॉस्किटोज विल ब्रीड. मॉस्किटो ब्रीडिंग से क्या हो सकता है कि मॉस्किटो जब ब्रीड होती है तो कौन से डिसीज मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं? तो डेंगू, मलेरिया जैसे डिसीजेस मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं. सो दिस इज व्हाट कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस. नाउ लेट अस गो अहेड. We will go ahead with page number 8. Can you tell how can we observe personal hygiene? Personal hygiene हम लोग कैसे maintain कर सकते हैं? That is, we should have good habits. Taking bath every day, then washing clothes, washing hands with soap, then never defecate in the open or urinate in the open. Then littering of the place should never be done in the open. Then garbage of the place should never be done. Garbage and unwanted material should not be randomly thrown. It should be given properly to the garbage collector. In our building, I'll tell you, we all know we suffer from plastic problem nowadays. In our building, every Wednesday and Sunday, for collecting plastic material, people come from Urja Foundation. We have to separate plastic material. We have to give separate raddi to raddi wala. We have to give separate metal pieces to raddi wala. We have to sort out. Otherwise, in our complex, whosoever doesn't do that, their photo is uploaded on the our building WhatsApp group, and then the not fine as such, but it is an insult, isn't it? So this is how the collection of garbage is done in our society. So this will minimize the creation of and random waste जो होता है कलेक्शन, वो नहीं होगा. सॉर्ट आउट
करके वेस्ट देना है हमको. Then there are certain people who do not follow this habit, that is good habits. So throwing randomly garbage. Another thing is whatever weight garbage is produced in our house, what we can do is you have to cut it into pieces. For example vegetables जो है हमारे घर में बचते हैं, like flower का जो back part है that we do not use, so उसको you have to cut pieces into pieces and keep it in the soil. Cover it with the soil, below also soil, above also soil, then that will automatically get degraded. What is my habit of doing is the left out, like cucumber peels hai, potato peels hai, then banana is a good source of phosphorus, so banana hai, then left out, like flower is very good for the health of plants. So ये सब के पीसेस जो है मैं मिक्सी में लगाती हूँ, मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के घुमाती हूँ, फिर उसका पानी प्लांट्स को देती हूँ. Plants grow very nicely on that water. Now another thing I do when I wash the dals and rice before cooking, we throw that washed water. So that washed water I give it to plants. It is also very good for the health of plants. So this is how we can minimize the generation of waste in our house. So generation of waste is minimized. Also the throwing of the garbage also will be less, and then it will be very productive. So these habits we should develop. Now going to public places during infections, like corona time, कंपलसरी क्वारंटाइन किया गया था लोगों को, वैसे ही करना है. हमको समझना चाहिए कि वी आर सफरिंग फ्रॉम, सपोज फीवर है, कुछ है, इन्फेक्शन है, देन वी शुड ऑन आवर ओन वी शुड कीप आवर सेल्फ सेपरेट. ओके. नाउ पर्सनल हाइजीन मतलब क्या? बिफोर ईटिंग फूड वॉश योर हैंड्स विथ सोप. नाउ चिल्ड्रन व्हेन यू गो होम आफ्टर left from the school, you are just, I know what you all are doing is you just throw the bag on the sofa and then directly you may enter in the bedroom or you may enter in the kitchen and you start eating. So that is a bad habit. What is a good habit? First of all, after reaching home, keep the bag at your place and then go and take. मेरे को तो कोरोना के टाइम से आदत ही लगी है कि मैं बात लेती हूँ, लेकिन बात नहीं तो एटलीस्ट वॉश योर हैंड्स एंड लेग विद द सोप. दैट इज़ अ गुड हैबिट. देन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी कंज्यूम्ड आफ्टर वॉशिंग प्रॉपरली, एंड द फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड हाइजेनिकली शुड बी कंज्यूम. एज आई सेड, हाथ गाड़ी पे हम खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, बेलपूरी खाते हैं, सेव बटाटा पूरी खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं. And roadside, especially in the rainy season, absolutely we should avoid it. Once in a blue moon you can eat it, but see to it that it is at proper place, proper hygiene is maintained, proper cleanliness is there. Who are serving to us, they should wear hand gloves. You know, most of the pani puri vendors now, they are suffering from hand infections. So you have to see that whether they are maintaining proper hygiene or not. Water should be filtered and boiled before drinking, especially this is all in the rainy season. Now let's go ahead with the next. Our next question in can you tell का है, why should we drink boiled water in the rainy season? क्या कारण हो सकता है बच्चे लोग? क्योंकि the water from the surrounding region seep into the water bodies. Suppose there is a leakage, water carrying pipe को leakage है, and there is a water clogging over there, and the contaminated water is surrounded by the water which is carrying by pipeline. So what will happen? That contaminated water will enter into our drinking water, and then the germs, infection like cholera, dysentery, diarrhea, all this will enter in that water. So we should avoid drinking such water. So boil water better and drink it. The turbid water is mixed in that case into the potable water. Potable water मतलब water which is capable of drinking. Now उसमें कौन से germs रहेंगे? टाइफॉइड है, फिर I already told you, hepatitis है, डायरिया है, dysentery है, enteritis है. और so drinking water has to be infection free. So disinfected, it should be clean, and by boiling we can avoid all these things.
Why the clean hand? Third question is why the clean hands drive is run in the school. There are many germs on our hand, unclean hands, and if the germs enter in the mouth, they can cause many diseases of the alimentary canal. First of all, it will enter into our alimentary canal. So when you are consuming food, the hand is not clean, then first of all our digestive system will get affected, and we suffer from dysentery, diarrhea, and all most of the times. So we should clean our hands before especially having food. So clean hands drive is run in the school. Why run in the school? छोटेपन में जो आदतें लगती हैं वही कैरी फॉरवर्ड होती है पूरे ज़िंदगी में. अगर हमने बचपन में कुछ फॉलो नहीं किया ना थिंग्स, then it is very difficult to adopt such habits. So we should develop proper habits at the childhood. Okay, so we have seen now. Can you tell questions which are there on the page number 8? Now let us go ahead with the next disease, that is dengue. Now you can see dengue. Mosquitoes lay eggs in waterlogged places. अभी हमने देखा, and thereby their population increases. Different species of mosquitoes spread different diseases. Dengue is spread by Aedes aegypti. The disease is caused by DEN1,2 virus belonging to the type of flavivirus. Now, what are the symptoms? क्या क्या symptoms है, क्या क्या दिखाई देता है, कैसे पहचानना है कि डेंगू है? एक्यूट फीवर होता है, फिर हेडेक एंड वोमिटिंग, पेन्स इन आई सॉकेट, इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम. ये इसमें ही दिखता है, बाकी की डिसीज़ में ज़्यादा दिखता नहीं. नाउ डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ये भी इसमें ही है. प्लेटलेट काउंट बहुत कम होते हैं तो सेपरेट प्लेटलेट्स शुड बी गिवन. नहीं तो इंटरनल हैमरेज होता है. हैमरेज मतलब वुंड फॉर्मेशन होना. सो दैट हैमरेज कैन बी एनीवेयर इनसाइड द बॉडी. फॉर दैट वी शुड ट्राई टू इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट. अभी ये प्लेटलेट काउंट कैसे इंक्रीज होता है मालूम है? देर इज़ अ ड्रैगन फ्रूट. इफ़ यू ईट दैट ड्रैगन फ्रूट ऑल्सो, then the platelet count increases. So there are certain Ayurvedic medicines also which will increase your count, that is platelet count. Now let's go ahead with the next, that is observe the picture and then discuss. Now see this picture. Now here is, it is a figure number 2.5. Here is the container. Now in this container, breeding of mosquitoes in this tank can happen. So mosquitoes will reproduce over here. Now this second picture जो है इसमें क्या दिया हुआ है? एक मटका है. So breeding of Aedes mosquito in this container or in this utensil can happen. Now this is a water cooler. अभी हम कूलर यूज़ करते हैं. ऑल टाइम वी डू नॉट यूज़ कूलर. मई महीने में कूलर यूज़ किया, जून में वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें अंदर पानी पड़ा रहेगा. तो क्या होता है, वो पानी जो पड़ा हुआ अंदर रहता है उसमें मॉस्किटोज ब्रीड होते हैं. एंड देन इन्फेक्शन स्टार्ट्स ऑफ डेंगू, मलेरिया एंड ऑल विच आर द स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटोज. नाउ ये बेबी जो दिखाई दे रही है उसको इन्फेक्शन होगा कि नहीं मॉस्किटो की वजह से. सो दैट चाइल्ड में सफ़र फ्रॉम फीवर एंड ऑल. नाउ ये इसमें जो कंटेनर में ये जो ग्लास कंटेनर है उसमें फ़िश दिखा है. ये है गप्पी फ़िश. गप्पी फ़िश कैन कंट्रोल लार्वे ऑफ मॉस्किटो बिकॉज इनका खाना जो है ना गप्पी फ़िश का, वो है इसके मॉस्किटो के लार्वे खाना, वो उनका खाना है. नाउ द नेक्स्ट इज़ फ्यूमिगेशन इज़ डन बाय द गवर्नमेंट पीपल. यू मस्ट हैव सीन, गवर्नमेंट के लोग आते हैं कुछ हाथ में ऐसा लेके बंदूक जैसा, और वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं. सो दैट विल किल द लार्वे ऑफ द मॉस्किटो. नाउ दिस इज़ मॉस्किटो कॉइल है. इफ़ यू यूज़ द मॉस्किटो कॉइल ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्व्स फ्रॉम गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ मलेरिया, डेंगू एंड ऑल. अनदर थिंग इज़, द बेस्ट थिंग इज़ मॉस्किटो कॉइल से भी बेहतर कौन सा इलाज है, उपाय है उसको, तो यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स. वेरी वेरी सेफ. क्लियर? सो इट इज़ वेरी safe to use mosquito nets, and we will not have the
such type of then diseases. Now see, do you know malaria is caused due to the female Anopheles mosquito, while the elephantiasis is due to female Culex. Now Anopheles and Aedes grow in clean water, while the Culex is growing in the dirty water or sewage water. So waterlogging mainly will spread this Culex, right? Now we will go ahead with the I will give you the slides of all these causative organisms. Now we will go for the swine flu. Now you can see over here swine flu reasons of infection. Infection of swine flu occurs through the pigs and humans. Viruses of swine flu are spread through the sweat of infected person. Similarly, it is spread through the secretions of nose, throat and saliva. So, covering of mouth is so important. You must be knowing. क्यों हम लोग हैंडकरचीफ यूज़ करना हमने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वी विल कवर आवर माउथ, अदरवाइज with our coughing, with our sneezing, bacteria will enter in the atmosphere or surrounding air. Now symptoms of swine flu, that is difficulty in breathing, sore throat and body pain are the typical symptoms of swine flu. देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू कहाँ कहाँ होता है. देखो, फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट टू द लेबोरेटरी. उसको बोलते हैं स्वैब लेना. तो ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस NICD दिल्ली. बट नाउअडेज मेट्रोपोलिस जैसे हॉस्पिटल्स में वगैरह ये टेस्ट किया जाता है. नाउ डू यू नो फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मेक्सिको इन 2009. स्वाइन फ्लू इज कॉज ड्यू तो वायरस इन्फ्लुएंजा. तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, true or false, analogy. That is virus H1N1. Persons who come in contact with the pigs can contract the disease. Now we will go ahead with the AIDS, that is acquired immunodeficiency. Students, not now I am going to ask you questions like which are the viral diseases which are given in the textbook. That is AIDS है, हिपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज़ है एंड पोलियो. देन बैक्टीरियल डिसीज कौन से हैं? टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा है, लेप्रेसी है. देन डिसीजेस विच आर स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स कौन से हैं? वो है मलेरिया, डेंगू एंड एलिफेंटाइसिस. देन हेरिडिटरी डिसीजेस कौन से हैं? डायबिटीज़, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड कलर ब्लाइंडनेस. सो these are just one small test, one मार्क का क्वेश्चन मैंने पूछा. अभी और क्वेश्चन पूछती हूँ. अभी मलेरिया टाइफॉइड कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? साल्मोनेला टाइफी. देन कॉलेरा विब्रियो कॉलरे से होता है. देन डायरिया बैसिलस इन्फेक्शन से होता है. इवन एमीबी डिसेंट्री से होता है. देन ट्यूबरकुलोसिस कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली. देन वी विल सी नाउ importance of the days. For example, World Diabetes Day is celebrated on which date? That is 14th of November. Then World Heart Day is celebrated on 29th of September. Then World Blood Donation Day, that is 14th of June. And then World Health Day, 7th of April. So this is again a general knowledge question. Now we will see now in the next, that is in the next video regarding AIDS. So in the next lecture I will give you a detailed diagram of dengue, then swine flu, then AIDS, etc. So till then, bye.